सेटा होची जहार तार बेस्ट अछि माने डेटा वेयर हाउसिंग रो जोटा बेस्ट अछि सेटा से पिक करूची प्लस डेटा लेक रो जोटा बेस्ट अछि सेटा से पिक करिकी क्रिएट करूची कि लेक हाउस बनाइछि ओके जोटा कि लेक हाउस टा ओनली यूज होची डेटा ब्रिक्स रे सेई जो टेक्निक टा जो कांसेप्ट टा एटा यूज होची डेटा ब्रिक्स रे ओके डेटा ब्रिक्स रे कोन होची ना से जो लेक हाउस बनाइछि सेतरे कोन गोटे फॉर्मेट दरकार टेबल को फॉर्मेट रे हमर डाटा टा स्टोर हो दैट इज डेल्टा टेबल ओके सो बेसिकली डेल्टा टेबल गोटे फॉर्मेट सेटा हमर गोटे स्टोरेज लेयर जेमति अछि हमर जेमति थाए डाटा लेक टाइप रो से गोटे डेल्टा लेक अब डेटा लेक होची एडीएलएस रे यूज होची बट सेटा जेतबे हम जेतबे यूज करछु माने पाथ इज सेम माने हमें स्टोरेज पाथ एटा सब सेम यूज करछु बट जो फॉर्मेट हम यूज करछु डेल्टा लेक डेल्टा टेबल जो फॉर्मेट यूज करछु सेटा हम गोटे प्रॉपर्ली मैनेज फॉर्मेट रे होची ओके नॉट लाइक अदर फॉर्मेट अदर्स रे कोन होची ना तमे यदि गोटे फाइल सेव करिवो से ओनली फाइल टा ही रहइबो राइट देयर इज नो लॉग नथिंग बट एथिरे कोन होची ना तमे तले गोटे फाइल फॉर्म रे ताकू सेव करूचो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस लाइक सेटा कमिट केते केते हला कोन चेंजेस अछि मेटा डाटा एवरीथिंग सो ओके तो सो जोटा कि ताकू सेटा मैनेज करिया को हेल्प करूची एंड किछि डेटा यदि इंफॉर्मेशन लॉस हेची देन वी कैन रिट्राइव द डेटा तो सेति पे हमर कोन होची ना डेल्टा टेबल सेटा यूज होची जोटा कि डेल्टा लेक होची गोटे स्टोरेज लेयर ता अंडर रे हमर डेल्टा टेबल होची जोटा कि हमर गोटे फॉर्मेट डेल्टा टेबल होची गोटे फॉर्मेट रो डाटा रो गोटे फॉर्मेट जोथरे को हमें डाटा को स्टोर करिब इट्स अ डेल्टा टेबल लाइक अदर फॉर्मेट जेसन हो कि हमर पार्के हो सब ओके एंड जे फॉर्मेट रे डेल्टा टेबल होची गोटे कंप्लीट कोन गोटे सीट फॉर्मेट डेल्टा फॉर्मेट रे होची डाटा बट तदर तार जो फाइल फॉर्मेट होची सी होची पार्के फाइल सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द हायरार्की सो तो हायरार्की जदि तुम बुझिबो ओके तो तमरो लेक हाउस आसुची लेक हाउस ओके ता अंडर रे कोन आसुची ना तमरो लेक हाउस तापर आसिला तमरो डेल्टा लेक ओके बिकॉज लेक हाउस टा कोन डेल्टा लेक टा होची गोटे स्टोरेज लेयर जोटा कि हमर एठी यूज होची ओके लेक हाउस डेल्टा लेक रे फॉर्मेट कोन रोची हमर डेल्टा टेबल हम ए फॉर्मेट रे डाटा को स्टोर करछे इट मे बी टेबल फॉर्मेट मे बी अ फाइल फॉर्मेट ओके डजंट मैटर ठीक अछि डेल्टा टेबल अंडर रे डाटा स्टोर केमति रहउची पार्के फाइल रे ओके पार्के फाइल सो एटा होची हायरार्की तो बेसिकली डेल्टा टेबल माने कोन गोटे कंप्लीट थिंग जेमति हम डेल्टा फॉर्मेट रे डाटा एटा होची को डेल्टा टेबल टा होची गोटे फॉर्मेट एटा गोटे होची फॉर्मेट ओके से फॉर्मेट माने हम डेल्टा फॉर्मेट रे डाटा को जते बेले हम स्टोर करबा कि सेव करबा से को करबा ना हम गोटे डेल्टा लॉग क्रिएट करबो जोतरे कि हमर मल्टीपल modification files हो कि json file crc file all these things will be created okay then we have parquet file कोन करछि ना so parquet file एटा गोटे फॉर्मेट माने ओनली फॉर्मेट जेति csv एटा गोटे parquet file फॉर्मेट जोटा कि हमर डेल्टा टेबल ले से रखुछि डेल्टा टेबल ले डाटा स्टोर होछि parquet file रे एंड json एंड crc फाइल हमर मेटा डाटा स्टोर करछि डेल्टा लॉग अंडर ओके एंड कंबाइन कर दो जदि हमें ताकू सेटा जे कहबा हमर डेल्टा फॉर्मेट ओके सो हमर डेल्टा फॉर्मेट कोन रहउछि कि डेल्टा फॉर्मेट इज इक्वल टू हमें कहबा कि पार्के फाइल प्लस डेल्टा लॉग এটা डेल्टा अंडरस्कोर लॉग ओके एटा ओके डेल्टा लॉग रे कोन रहउछि crc एंड json फाइल ओके सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ए दिटा कंबाइन करले हमर डेल्टा फॉर्मेट रे रहउछि सो एटा सबले माने गोटे टाइप रो कोन होछि हमर गोटे फाइल फॉर्मेट हमें तले कोन हमें सबले कंपेयर करछु कोन कि हमें डाटा सेव करते जे csv फाइल रे हमर गोटे फाइल क्रिएट करथला ओके बट एठी कोन होछि ना एठी गोटे फोल्डर क्रिएट हे जाउछि तुम जत्ते बेले भी डेल्टा टेबल रे जोटा भी रखिबो इट विल ऑलवेज क्रिएट अ फोल्डर माने एमती डाटा माने डाटा ब्रिक्स रे भी तुम जहां भी तुम रखिबो दैट विल बी क्रिएटेड एज अ फोल्डर ओके सो फोल्डर csv हो जेसन तुम फोल्डर क्रिएट हो फोल्डर भितरे तुमर गोटे पार्ट फाइल सब रहो कहीं कि ना
बिकज आम डाटा जो राइट करूँ ताले रीड करबा तो लॉजिकली से तो पार्ट फाइल रहइबो डेफिनेटली राइट करले भी से गोटे पार्ट फाइल रहइबो ना पार्टीशन फाइल रहइबो सो दैट हमर डाटा प्रॉपर्ली पार्टीशनड वे रे रहइबो एंड इट इज इजी फॉर अस टू कोन ताको रिट्राइव करिया पे माने ताको फेच करिया पे इट इज इजी ओके सो बेसिकली पार्क के फाइल होची डाटा टाको स्टोर करिया पे एटा होची कोन स्टोरिंग डेटा एटा होची हमर स्टोरिंग डेटा ओके एटा होची कोन ना हमर फॉर मेटा डेटा ओके ठीक अछि ए कंप्लीट कंबाइन कर देले हमर डेल्टा फॉर्मेट रहउची जेमति मु काली देखैथिली तुमको एतिकी बुझियाला यस सर बुझिले सर ଏବେ हम्म ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଝିହେଲା ନା ବିକଜ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ରିପିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଓକେ ଠିକ ଅଛି କଣ? सर स्कीमा हम इवोल्यूशन କଣ ହେଲା सर स्कीमा इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट टा डेल्टा टेबल ପାଇଁ सर ସ୍କିମା ଇଭଲ୍ୟୁସନ କନସେପ୍ଟ ଏଲିଟରେବଲ ହଁ କରେକ୍ଟ ସେଟା କାଲି सीएसबी ରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ତ ହଉନଥିଲା ସर ସ୍କିମା ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଟା ଡେଲ୍ଟା ଟେବଲ ରେ ବିକଜ ଆମ ଡେଲ୍ଟା ଟେବଲ ଟା ହଉଛି ଡେଟା ବ୍ରିକ୍ସ ରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ କରିବା ସବୁ କିଛି ଡେଲ୍ଟା ଟେବଲ ରେ ୟୁଜ କରିବେ ଓକେ ओके these are the examples that are कହୁची CSV file we can write it and we can use it but mostly हमें समस्त prefer करती कि like ଆମର final data टा that should be in the form of table and table कौन होता है we can directly connect ना हमारा power BI हो जहाँ भी हमें directly connect करके ताको use कर परिबा so that is why ताको हमें delta table format रे रखुଛୁ okay that's why like एठी हम ए जो हमर कैटलॉग भितर अछि जहाँ भी that is in the tables लिखा है या भितर सब टेबल फॉर्मेट रे ओके जदि एई जे हम जदि वॉल्यूम भितर रखिबा सेटा हमर गोटे टेबल माने फॉर्मेट डेल्टा टेबल रहइबो बट ता भितर हम कोन रहइबो सब जाक मेटा डाटा सब रहइबो ओके बट एथि जेतल टेबल रहउची यार मेटा डाटा टा हमर मेटा स्टोर रे स्टोर होउची बेसिकली तुम भाबुतो कि कोन आ भितर हम स्टूडेंट डिटेल्स हम लगा लिखिथिलु स्टूडेंट डिटेल्स भितर हमर कोन पार्ट फाइल डेल्टा लॉग क्रिएट होउची बट टेबल रे तो किछि डेल्टा लॉग नाही ना यस टेबल रे डेल्टा लॉग टा हमर एथि स्टोर होउनी से मेटा स्टोर रे स्टोर होउची जोटा कि बैकएंड रे ओके ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ସ୍କିମା ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଟା ମାନେ ପ୍ରପରଲି ହଉଛି ଦେଖିए ସ୍କିମା ଇଭଲ୍ୟୁସନ ସେ କେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛି କି ଆମର ଏଇ ଟେବଲ ଟା ଅଛି ଏଇ ଟେବଲ ଟା ନାହିଁ ତ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଦଉଛି ନା एंड हिस्ट्री भी से आइडेंटिफाई करूची केमती सो मेटा स्टोर टा सेटा गोटे अलगा लोकेशन रे तार स्टोर होची यूनिटी एटी कैटलॉग रे बट एथिरे कोन होची ना हम जेहेतु नॉर्मल फाइल भली हम ताको स्टोर करछे डेल्टा टेबल को दैट्स व्हाई सब जका हमर जतिक लॉग अछि डेल्टा लॉग भितरे ही हमर स्टोर होची तो डेल्टा टेबल होची मेन कांसेप्ट डेटा स्टोरिंग करिया डेटा स्टोर करिया पे डेटा को मैनेज करिया पे आउ डेटा को माने प्रॉपर्ली हैंडल करिया पे डेल्टा टेबल टा यूज होची डेटाबेस रे ओके ବୁଝିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଫାଇଲ ଏଇଟା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଫାଇଲ ସେ ଷ୍ଟୋର କରୁଛି ଦେଖ ପାର୍କେ ଫାଇଲ ଏଟା snappy dot parquet file that is the actual data is being stored here okay ଏଠି ଆମର actual data store ହଉଛି okay and ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ଆମର delta log ଭିତରେ ଆମ directly ଆମକୁ directly ଏଠି କଣ ଏଟା ଆମର meta data ଯାହା ବି ଆମର column information କି ଯାହା modify କଲୁ କିଛି new column ଯଦି add ହେଲା all these informations are here ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ read କରିବା delta table କୁ okay ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ file ର path ଦଉଥିଲେ but we don't have to give the file path directly ଆମେ ଯିବା student details ଲେଖିଦବା okay spark dot read dot spark dot read dot format delta then ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି student details ଦେଇଦବା directly ସେଟା automatically ଆମର
जो फाइल को रीड कर दबो हमको फाइल रो लोकेशन दबार नाही ए फोर बिकॉज़ इट्स अ कंप्लीटली गोटे डेल्टा टेबल जो स्टूडेंट डिटेल्स अछि कंप्लीटली गोटे डेल्टा टेबल ओके तो मु एटा करूछि देखो स्टूडेंट डिटेल्स अछि आई विल कॉपी इट डेल्टा ओके कितने टाइम को लगो चलो ट्रेक नंबर details सर्वरलेस कंप्यूटर को प्रॉब्लम होछि ठीक अछि जेतले हम एमती रीड करिबा ओके से ऑटोमेटिकली तमरो फाइल को तुमको आउटपुट दबो से कोन करो जतेटा भी पार्ट फाइल होछि एठी एमती स्पेसिफिक इट विल कंबाइन ऑल द पार्ट फाइल्स एंड तुमको डाटा दबो बिकॉज़ से ओनली पिक करिवे कि यू आर रीडिंग द डेटा रीडिंग डेटा मींस इट ओनली डाटा को रीड करछो नो नीड टू यूज दिस वन से ऑटोमेटिकली ता कांसेप्ट अनुसार ऑटोमेटिकली तमरो फाइल जतिके अछि ताको कंबाइन कर दबो एंड इट विल गिव यू अलगा केसेस रे कोन होता तुमको स्टार करी देबा पड़तला स्टार डॉट जेसन गोटे फोल्डर अंडर जो जो जेसन फाइल अछि कि पार्के फाइल अछि कि सीएसवी फाइल अछि केमती तमे फेच करथलो स्टार डॉट जेसन हो कि सीएसवी हो जहाँ भी हो ओके बट हियर यू डोंट हैव टू गिव एनीथिंग ओके डायरेक्टली तमे गोटे पाथ देले इट विल ओके डायरेक्टली तमे पाथ देले इट विल ऑटोमेटिकली गिव यू द आउटपुट ओके लेट्स लॉग go to delta to log is to fixed एटा इथरे ही परिबो पुन उतरे ओके ठीक अछि समस्त डेल्टा टेबल बुझी पारलो पार्क डेल्टा टेबल रे फाइल टा स्टोर होचे हमर पार्के फॉर्मेट रे ओके बट पार्के फाइल फॉर्मेट टा यदि हमें खाली पार्के फाइल फॉर्मेट रे स्टोर करबा तार स्ट्रक्चर टा डिफरेंट आसीबो मु खाली पार्के फाइल रे स्टोर तले करछि एटा हमर ओके टारगेट रेकॉर्ड डॉट पार्के यार फॉर्मेट डिफरेंट आछी ओके देखो ये केमती हला स्टेज सक्सेस देयर इज नो डेल्टा लॉग हियर ये पार्ट फाइल रे क्रिएट करछि बट से हमर केथि डेल्टा लॉग रे किछि नाही हमर सक्सेस कमिटेड स्टेज ए जी फाइल टा क्रिएट होछि एंड पार्ट फाइल जेतल पार्के फाइल रे मु स्टोर करछि बट डेल्टा टेबल रे मु ताको स्टोर करछि इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा से कोन करछि ना गोटे फोल्डर क्रिएट करछि फोल्डर भितरे बहुत सारा पार्ट फाइल विथ डेल्टा लॉग फोल्डर
सेमती क्रिएट करछि ओके सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्के फाइल एंड डेल्टा टेबल ओके पार्के फाइल टा हमर डेल्टा टेबल भितरे यूज होछि तो डेल्टा टेबल रे हमर जो डाटा को स्टोर करबा सेटा हमर पार्के फॉर्मेट रे स्टोर होबो ओके डेल्टा फॉर्मेट भितरे जो फाइल टा स्टोर होछि सेटा पार्के फॉर्मेट ओके बुझियला ना को जगह डाउट्स अछि तो कोन पर ट्राई होनी कोन पर सर बुझिले सर सेटा समझ बुझियला तो सर से एरर टा आसिले सर्वरलेस रे एनवायरनमेंट चेंज करले हे जाउछ माने सेडे साइड रे सर राइट साइड रे एटा तो हाँ सर एनवायरनमेंट वर्जन रे जदी कॉन्फ़िगरेशन जाई चेंज कर दोछु तो सेटा प्रॉब्लम सॉल्व हे जाउछ बेले बेले एनवायरनमेंट वर्जन रे सर 2 को 3 कर देले ओके नहीं सर्वरलेस रे मोस्टली टिके टिके प्रॉब्लम्स आस्तिबो जो मु भी रियल टाइम रे फेस करछु बहुत सारा जिन सर्वरलेस रे हुए नहीं जति पे हमको ऑल पर्पस क्लस्टर यूज करिया पड़े नहीं बाकी समस्त बुझीला डेल्टा टेबल टा कौन दीटा जिनस अच्छी गोटे स्पार्क काली कही मुझे डाटा ब्रिक्स दीटा मोर इम्पोर्टाट कॉन्सेप्ट जोटा कि डाटा ब्रिक्स को अलग सब प्लेटफॉर्म्स अलग सब टेक्नोलोजी रु डिफरेंट करे जोटा कि स्पार्क इनबिल्ट अच्छी एंड डेल्टा टेबल ओके सो डेल्टा टेबल रे कौन होची ना रिफ्रेश इज नॉट सपोर्टेड ओके फाइन ओके तो जोटा कि बाकी सब जिनस रु हमको सेपरेट करे दैट इज कॉल्ड जोटा कि डेल्टा टेबल आमे कहबा ओके तो एठी हमर से बे रीड हबो डाटाटा ओके सी एठी कोन होची ना हमें किछि माने फॉर्मेट देलेनी किछि देलेनी ओनली जस्ट स्टूडेंट हमर डेल्टा टेबल रा ना होची स्टूडेंट डिटेल्स ओके ता विधे से ऑटोमेटिकली जो पार्ट फाइल क्रिएट हेची ताको सब एकी कैप्चर करके हमको आउटपुट टा देला ओके रीड करके फाइनल डाटा फ्रेम टा डिस्प्ले करला ओके so this is how the delta table works and either तुम path दे परिबो जति तुम टेबल लेवल लिखुछ तुमको spark.read.table लिखिया पड़ियो ओके ए either way ठीक अछि सर काली मु डेल्टा टेबल गोटे क्रिएट करथि सर हम्म ताको स्पार्क डॉट एसक्यूएल रे भी ये करियो सर हां spark.sql करियो बट सेते तुमको क्वेरी लिखिया पड़ो सिलेक्ट स्टार फॉर्म लिखिया पड़ो ओके सर तो डेटा परफॉर्मेंस है सेटा इट्स नॉट राइट कहना तुम गोटा सिलेक्ट करछो स्टार करछो जेटा कि सब जाक डाटा डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट सब प्रिफरेबल होची हम डेल्टा टेबल रो फॉर्मेट टा सेटा काली कहिथिली कि मन नै मोर एटा कहिथिली बोधे मु ना कहिनी क्रिएट डेल्टा नाइ टेबल सर कहि हाँ नाइ सर ठीक अछि ओके सो बेसिकली एठरे कोन होची ना हमें तो डेल्टा टेबल क्रिएट करियर मल्टीपल वेज अछि ओके दिस इज द वन वे जोटा कि हम कहली हमें गोटे फाइनल डेटा फ्रेम को गोटे डेल्टा टेबल रे राइट करछे दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग ए डेल्टा टेबल ओके जोटा कि हम मोस्टली हमर यूज होची प्रोजेक्ट माना करे बिकॉज़ हमें गोटे गोटे सोर्स रो डाटा को रीड करछे देन ताको ट्रांसफॉर्म कले देन फाइनली जो डाटा फ्रेम टा क्रिएट कला ताको हमें डेल्टा टेबल रे डेल्टा फॉर्मेट रे हो कि डेल्टा टेबल एज राइट करदेले ओके दिस इज द मोस्टली यूज्ड यदि हमें कहबा कि मु गोटे नॉर्मल डेल्टा टेबल क्रिएट करिवि तो यू कैन डू दैट नॉर्मल क्रिएट स्टेटमेंट तुम जेमिति यूज करछो सेम जिंस ओके सपोज तुम कहबो कि नहीं मु एथिके करिवि एसक्यूएल लिखिवि ओके क्रिएट टेबल ओके टेबल नेम जहाँ भी दबो ओके मे बी स्टूडेंट हो मे बी कस्टमर हो ओके कस्टमर देलो जहाँ भी देलो जहाँ भी तुम्हें जहाँ कॉलम देवा कथा दबो एठी ओके कस्टमर आईडी ओके इंटीजर हो ओके कस्टमर नेम हमर रही गला स्ट्रिंग ओके नेम ओके दैट्स फाइन तापर कौन करिवो ना तमे लिखिबो यूजिंग डेल्टा ओके दिस इज हाउ यू हैव टू गिव सो बेसिकली तमे तो गोटे ब्लैंक टेबल क्रिएट करछो नॉर्मली एसक्यूएल कोन करथलो
नॉर्मल टेबल करथलो क्रिएट टेबल नेम इनसाइड दैट ताको जहाँ भी तमर कॉलम नेम्स अछि देन विथ दैट डेटा टाइप you are giving okay but the same thing you can do it here also but गोटे ऑप्शन एक्स्ट्रा दवा पड़े यूजिंग डेल्टा सो दैट ये गोटे डेल्टा टेबल तमरो क्रिएट करके दबो ओके सो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ क्रिएटिंग ए डेल्टा टेबल एमती तमे क्रिएट करि पारे जोटा कि तमरो ब्लैंक डेल्टा टेबल क्रिएट करिवो देन जोटा कि पूर्व ऑप्शन टा देखले जोटा कि मोस्टली यूज होउची डाटा फ्रेम को तमे एज एटा कोन ब्लैंक क्रिएट करिवो बट मोस्टली तमरो कोन दरकार तमे सबले चाहछो गोटे तमरो डाटा को राइट करिया पे फाइनल आउटपुट को तमे गोटे टेबल रे राइट करिया पे तमे चाहछो जोटा कि तमरो टारगेट डेटा तो एटा कोन ब्लैंक डेटा तमे क्रिएट करलो बट से टारगेट डेटा करिया पे कोन करिवो यू कैन आल्सो डू दैट ओके तमे डायरेक्टली द राइट कर दबो विथ दैट स्कीमा से स्कीमा अनुसार तमे ताको राइट कर देलो एंड इट विल ऑटोमेटिकली गेट क्रिएटेड ठीक अछि Yes, बुझेला sir. एटा क्रिएट Yes. टेबल नॉर्मली हमें यूजिंग डेल्टा करी यूज करछे और एल्स देयर इज अनदर ऑप्शन आल्सो तमे यदि ट्राई करबो किछि सीएसवी फाइल ऊपर करिया पे भी दैट आल्सो यू कैन डू यूजिंग डेटा लोकेशन तुमको दबा पड़ो ओके सपोज तुम कहबो कि मोटे सीएसवी फाइल को यूज करी कि जेंते मैं spark.read.csv करूछो ओके सेटा करी कि से जेंति स्पार्क यूज करी परिबो और एसक्यूएल यूज करी कि भी करी परिबो क्रिएट टेबल जोटा एंती कस्टमर हे गेला यूजिंग डेल्टा लोकेशन दबो csv डॉट जो फाइल टा हो ओके लोकेशन देला लोकेशन रे तमे जहां भी csv फाइल लोकेशन की एनी फाइल जेसन फाइल लोकेशन जहां भी देबो ओके ओके सर मेरा डाउट है हम्म सर जेतବେଳେ ଆମେ ସେଭ୍ ଏଜ୍ ଟେବୁଲ କରୁଛୁ ସେ हम्म ମୁଁ ସେଇଠି ରାଇଟ୍ ରେ ଫର୍ମାଟ ଟା CSV ଦେଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏରର ଦେଖାଉଛି सर टेबल टा यस सर को एरर देखो सिंटेक्स एरर इन देखो सर बट सिंटेक्स ठीक ଅଛି सर सिंटैक्स रे कोटा को पार्ट रे टिके मते पार्स कोड टा पठेबो यस सर हम्म csv डॉट असला डॉट csv लोकेशन ओके डिटेल का लोकेशन अच्छा अच्छा लोकेशन तो ओके ओके create table okay teaches people in that location you have to create okay select arch select start from sorry okay so schema may be different you know because this is location
Syntax of your okay, which error it is? D1 write mode append save as a table. No, save as a table କରିବନି ନା save କରିବ ଏଟା table ଯଦି ଅଛି that will be table ଯଦି file କରୁଛି that will be only save okay ବୁଝିଗଲା ସୁଦୀପ୍ତ ମାନେ ସାର୍ ସେଭ୍ ଏସ୍ ଟେବଲ୍ କଣ କହିଲେ ସାର୍? save as table ଟା ମାନେ table କରିବ ଏଟା CSV ଫରମାଟ ଦଉଛୁ ନା table ମାନେ ସବୁବେଳେ delta ଫରମାଟ ରହିବ ଏଟା ଓକେ ଯଦି delta ଫରମାଟ ଦଉଛ then you can save as a table ଡେଲ୍ଟା ଫର୍ମାଟରେ ତ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ save ଯଦି ତମେ CSV ଫରମାଟରେ ରଖୁଛ then ତମର save ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ and ଲୋକେସନ ଟା ବି ଡଟ୍ CSV ଦବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ଯୋଉ ଭଲ୍ୟୁମ ଦଉଛ ଓକେ ସାର୍ ହୁଁ save as table is only for table and ସେଟା delta table not for others ସାର୍ ଏବେ ଆପଣ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟାରେ ଆପଣ ସେ ହୁଁ ଡାଟାଟା ବି ଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ସାର୍ କଷ୍ଟମର ଡାଟାଟା ଲୋଡ କରୁଛୁ ମେ ବି ମତେ ଆସୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବିକଜ ଅଫ ଦିସ୍ ଓନଲି ଯୋଉଟା କି ଅପରେସନ ସ୍କିମା ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଓକେ ତ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଅଲଗା ସ୍କିମା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଏଟା ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି ମେ ବି ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କେତେ ଡେଟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବି I'll be creating department number location ଏ ତିନିଟା ଦେଲେ it will be created okay ଠିକ ଅଛି okay department number ଟା ମୁଁ ନେଲି integer okay string ହେଇଗଲା department ଟା ହେଇଗଲା ଆମର volumes and ଏଟା ହଉଛି ଆମର department okay using that I'm select କରିକି ଏଇ location ରେ we are creating that delta table okay so ଏବେ ଯଦି ମୁଁ create କରିବି okay schema may be identity create street table size one position create table department integer string schema okay Hmm, integer string department that is not created department okay line one position one Hmm, shooting this schema may not be specified as create table schema the first table create table with this first schema and then insert the data from CSV here is the correct code okay is telling you to separate ମାନେ ମୁଁ directly ଆମେ insert କରୁଛୁ data କୁ select star କରିକି କହୁଛି କି ନାଇଁ directly first କର location କର then insert into department okay ଏମିତି କରିବା ଠିକ ଅଛି let's see no କଣ ଗୋଟେ problems ଆସୁଛି ଏଥିରେ volumes maybe invalid parameter value missing two columns
It is given. Okay, leave it. Okay, I'll check and I'll tell you. Okay, why it is not working. Okay, fine. So basically, create table କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ଏଟା create table if not exist, you can create the people ଗୋଟେ table ଅଛି, you can create it and using delta you have to give the location. Okay, କୋଉ location ରେ ତମେ ଚାହୁଁଛ ସେ delta table ଟା create କରିବା ପାଇଁ. Okay, ଯଦି କିଛି location ନାହିଁ you can directly create inside the table ଯୋଉଟା କି ଅଛି, but suppose ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେମିତି ତମେ delta table create କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, but ସେଟା ଗୋଟେ path ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, okay, table, then you can give the path. A location ମାନେ in this location it will create the table. Okay, people table. ठीक ଅଛି, then approach 2 is create table people, then ଆମେ କଣ directly we can use the CSV, ମୁଁ ଏଟା try କରୁଥିଲି CSV file କୁ read କରିକି directly ଆମେ create table କରିବା ପାଇଁ. Okay, but somehow it is not working. I'll check that. Okay, and other ways ଯେମିତି ରହିଲା ଏଇଟା ହଉଛି most common way, df dot write dot format delta save or save as table. Basically format ତମେ same ଦବ, save ଯେତେବେଳେ କରୁଛ it should be a path. Okay, and save as table କରୁଛ ମାନେ it should be a table name. Okay, save as table କରୁଛ ମାନେ it should be a table name. So either way you can use. ଯଦି ତମେ use କରିବ delta format and save କରିବ ଗୋଟେ path ଦବ, volume ଭିତରେ ଗୋଟେ path. But ଯଦି save as table କରୁଛ it should be a table name only. Okay, ଯୋଉଟା କି table catalog schema table name. Okay, these two things are different. Okay, सर हाँ. ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟ୍ ଟେବଲ କହିଲେ ଏବେ df ଡଟ୍ ରାଇଟ୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଏଇଟା ଯୋଉ ସେଭ୍ କରିବ ଡେଲ୍ଟା ଟେବଲ ସେଇଟା ହୁଁ. ପାର୍କେ ଫାଇଲ ଫର୍ମାଟରେ ସେଭ୍ କରିବ ନା କି? ହଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପାର୍କେ ଫାଇଲ ଫର୍ମାଟ ରେ ଫାଇଲ ରେ ସେଭ୍ କରୁଛ, ପାର୍କେ ଫାଇଲ ଫର୍ମାଟ ରେ ସେଭ୍ କରିବ. ଓକେ, ଓକେ ଦେନ୍ ଆକୁ ରିଟ୍ରାଇଭ୍ ଯଦି କରିବାର ଅଛି df ଡଟ୍ ରିଡ୍ କରିକିରି ସେ ଫାଇଲ ଲୋକେସନ ଦେଇକି ରିଡ୍ କରିପାରିବେ। ହଁ ହଁ, ଫାଇଲ ଲୋକେସନ ନା ସେ ଫୋଲ୍ଡର ଲୋକେସନ ଦବ ବେସିକାଲି. ଓକେ ସେ ସେଟା ମୁଁ ଫୋଲ୍ଡର କହିଲି, ଲୋକେସନ ଦେଇକିରି ଆମେ ହଁ ରିଡ୍ କରିପାରିବା ସେ ରିଡ୍ ଡାଟାଟାକୁ। କରିବ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିଡ୍ କରିପାରିବ। ସେ କଣ କରିବ ନା ଅଟୋମେଟିକାଲି ତମକୁ ସେ ପାର୍କେ ଫାଇଲ ର ଫର୍ମାଟ ବି ଦବାକୁ ପଡିବନି, ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯୋଉ ଡେଲ୍ଟା ଟେବୁଲ କ୍ରିଏଟ କର ଯେମିତି କ୍ରିଏଟ କଲ ସେମିତି ହିଁ ତମେ ରିଡ୍ କରିବ. ଓକେ, ଯେମିତି ଟେବୁଲ ର ଲୋକେସନ ଦଉଛ ଟିଲ୍ ଡେଲ୍ଟା ଟେବୁଲ ନେମ୍ ଯାଏ, ସେମିତି ବି ରିଡ୍ କଲା ପରେ ଟିଲ୍ ଡେଲ୍ଟା ଟେବୁଲ ନେମ୍ ଯାଏ ହିଁ ତମେ ରିଡ୍ କରିବ and it will give you the output. Okay, ଓକେ ଗଟ୍ ଇଟ୍ ସାର୍। ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ତମେ ବି ଏ ଦ୍ୱାରା this way also you can create, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିଲି create table କରିପାରିବ using delta, then location ଦେଇପାରିବ, then ତମେ data frame କୁ directly write କରିପାରିବ in the form of delta. Okay, then also what we can do, we can simply use other method how to read and write an delta table. So basically this is the most efficient method, ମାନେ performance ଯଦି ଆମେ consider କରିବା, this is the most efficient way to read a delta table. Okay, ଏଇଟା ହଉଛି most efficient way, ଯୋଉଟା କି ତମେ କହିଲ କି ନାଇଁ spark sql ବି we can do that. Yes, we can do that. spark.read.table ସେଟା ବି କରିପାରିବା, but for reading a specific delta table which is made only for the delta table read ଆଉ delta table ର ସବୁ operation କରିବା ପାଇଁ okay, ଆମେ ଏଇଟା ୟୁଜ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, so what we will do, ଆମର ଦିଟା ମେଥଡ ଅଛି। first we have to import from delta dot tables import delta table. Okay, delta table dot for ଗୋଟେ ହଉଛି for name, ଗୋଟେ ହଉଛି for path. କଣ ପାଇଁ for name ହଉଛି table name ପାଇଁ, for path ହଉଛି path ପାଇଁ। ଓକେ, ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଡେଲ୍ଟା ଫର୍ମାଟ ରେ ସେଭ୍ କରୁଛ, ସେଭ୍ ଆସ୍ ଟେବଲ କରୁଛ, ସେଭ୍ କରୁଛ ପାଥ ରେ, ସେଭ୍ ଆସ୍ ଟେବଲ କରୁଛ ଟେବଲ ରେ। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ରିଡ୍ କରିବ ଡେଲ୍ଟା ଟେବଲ ରେ, ଡେଲ୍ଟା ଟେବଲ ଡଟ୍ ରିଡ୍ for name କରୁଛ ମାନେ ଟେବଲ ନେମ୍ ଟା, for path ମାନେ path ଟା। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ୟେସ୍ ସାର୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍। ଓକେ, ତ ଏଇଟା କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଡେଲ୍ଟାର ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିବ, ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରିବ। ଓକେ, ସୋ ଏଠି ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଯଦି ଆମେ ଡେଲ୍ଟା ଟେବଲ ଏମିତି କ୍ରିଏଟ କରିବା, ରେଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି। ବେସିକାଲି ସେ କଣ କରୁଛି ନା df ଏଠି କଲା ଆମର df is equal to this, then df ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବି, df ର ଡିସପ୍ଲେ ମୁଁ କରିବି, ଦେଖ ମୋର ଏରର ଆସିବ। ଓକେ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କଲା। ओके, डेल्टा टेबल हैज नो एट्रिब्यूट डिस्प्ले। तो बेसिकली हमको एठी एटा गोटे रेफरेंस, डेल्टा टेबल ला गोटे रेफरेंस, तो ताको हम कन्वर्ट करिया को पड़िबो, देन इट विल गिव मी द आउटपुट। ओके, सेटा मते आउटपुट ता देला। ओके, ठीक अछि।
So basically ଆମେ ଏଠି କଣ କରୁଛେ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଲ୍ଟା ଟେବୁଲ ରେଫରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ ଓନଲି ମେଡ୍ ଫର ଡେଲ୍ଟା ଟେବୁଲ ରିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ କଣ ଦେଖ ସ୍ପାର୍କ ଡଟ୍ ରିଡ୍ ଡଟ୍ ଟେବୁଲ ହଉଛି ତମ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହୁଏ। ସ୍ପାର୍କ ଡଟ୍ ରିଡ୍ ଡଟ୍ ଟେବୁଲ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ କରୁଥିଲୁ କି ସ୍ପାର୍କ ଡଟ୍ ରିଡ୍ ଯାହା ବି ୟୁଜ କରୁଥିଲୁ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଣ ପାଇଁ ମେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଫର ଅଲ୍ ସବୁ ଫର୍ମାଟ ଡାଟାକୁ ରିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ ହଉଛି। CSV ହବ ଜେସନ ହବ ପାର୍କେ ହବ ରେଡସିଫ୍ଟ ଯାହା ବି ଯେତେଟା ଫର୍ମାଟ ଅଛି ଆମର almost all the formats we can read by using spark.read.table and ତାପରେ ଗୋଟେ data frame ସେ create କରିବ and by using that data frame you can do n number of operations. Okay, but here what we can do is you can simply use delta table dot for name. So by default এটা ଯାହା create ହବ এটা ଗୋଟେ delta table ର reference. Okay, ଗୋଟେ reference create କଲା and using that reference ଆମେ delta table ର ଯାହା ବି features ଅଛି ତାକୁ ଆମେ implement କରିପାରିବା। features in the sense suppose ମୁଁ କହିବି କି ମତେ delta table ରେ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ history ଦେଖିପାରିବା ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିପାରିବି history by using this only ମୁଁ ଯଦି spark dot read dot table କରିବି ତ ମତେ history ଦେଖିପାରିବିନି। I can ଦେଖିପାରିବି I can read ମାନେ I can see the history of this data frame କି ଏଇ delta table ର ଯାହା ବି ଦେଖିପାରିବା by using this only। ସପୋଜ ମୁଁ ମର୍ଜ କରିବି ଯେମିତି ମର୍ଜ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ମର୍ଜ ଡାଟା କରୁଛୁ ରାଇଟ୍। ତ ମର୍ଜିଂ ଡାଟା वी कैन डू बाय यूजिंग रेफरेंस टेबल। এই ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ଓନଲି ଏଇ ଡେଲ୍ଟା ଟେବୁଲ ହିଁ କରିପାରିବା ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଇଟ୍ ଇଜ ଓନଲି ମେଡ୍ ଫର ଦ ଡେଲ୍ଟା ଟେବୁଲ। ଓକେ, ଜଷ୍ଟ ରିମେମ୍बर ଯୋଉଟା ମୋଷ୍ଟ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ୱେ ଅଫ ରିଡିଂ ଏ ଡେଲ୍ଟା ଟେବୁଲ ଇଜ ଦିस। ओके, ठीक ଅଛି, not like spark sql nothing। okay, you can use this one for most efficient way। तबे हाँ एसक्यूएल क्वेरी यू कैन यूज इट बट एवरी टाइम तुम तो एसक्यूएल क्वेरी यूज कर परिबो ना तुमको राइट करिया पे हेले किछि भी अलगा ऑपरेशन करिया को यू नीड पाइथन। सर जदि हमें डिस्प्ले करे तो एवरी टाइम वी हैव टू कॉल df डॉट टू डीएफ df हाँ हाँ एवरी हाँ टाइम। एवरी नहला को असाइन कर दबो को गोटे वेरिएबल रे। ओके, df हम्म, को जदि असाइन कर देले हाँ देन सेटा ए कंप्लीट को तमे यदि गोटे असाइन कर देलो देन इट विल बी डेटा फ्रेम बट एटा गोटे रेफरेंस क्रिएट करछि। ओके, ए रेफरेंस द्वारा देखो तो बेनिफिट कौन कि तमे डायरेक्टली गोटे डिस्क्राइब माने मारिको सपोज मु एठी कहबी कि नहीं मते डीएफ अछि तो फॉरगेट अबाउट दिस। ओके, सपोज मते हिस्ट्री देखियार अछि सो व्हाट विल आई डू डीएफ डॉट हिस्ट्री ओके डॉट डिस्प्ले। तो मु या ऊपर जहां भी चेंजेस ହେଇଛି आई कैन सी दैट इट विल गिव मी कि केतेबेले कोटा आंसर एबे हमर दीटा रेकॉर्ड अछि स्टूडेंट ऊपर राइट। तो एई जो स्टूडेंट ऊपर हमर दीटा रेकॉर्ड अछि कोन पे ना आई थिंक आई डिड इट लास्ट वीक राइट क्लोज आईडी व्हेन आई डिड दिस। ओके यस्टरडे आई डिड इट हां तीथर मु ताको अपडेट करथिल ना फर्स्ट मु कोन करली ताको क्रिएट करली क्रिएट देखो एटी लिखि दोछ ऑपरेशन कोन करलु क्रिएट टेबल एज सिलेक्ट बेसिकली क्रिएट टेबल करली देन मु ताको कोन करले राइट कर देले औथरे। सो टू ऑपरेशंस एई डेटा को मते कोन दी थर ऑपरेशन करली राइट ऑपरेशन दैट इज हमर दीटा लॉग क्रिएट हे गला। सपोज मु हिस्ट्री देखियो चंदी कोन मोर एई वर्जन को रिवर्ट करियर अछि कि एई वर्जन को रिवर्ट करियर अछि सो आई कैन बाय डिफॉल्ट तमे तले रीड करिवो से तुमको लेटेस्ट वर्जन रो डाटाटा शो करिवो। बट तमे कहबो कि मते यदि प्रीवियस वर्जन्स एनी वर्जन्स यू नीड द डेटा देन यू कैन सिंपली गो टू दैट वर्जन एंड यू कैन रिवर्ट इट। ओके, दैट इज वन एडवांटेज तमे डेटा को रिवर्ट करि परछो हिस्ट्री डाटा को तमे रिवर्ट करि पारछो। ओके, दैट इज वन एडवांटेज जोटा कि अलगा केस रे कोन होछि ना हमको स्टोर करिया को पड़ते हिस्ट्री डाटा कि तुमको गोटे फ्लैश क्वेरी अछि किछि भी क्वेरी करी कि हमको रिट्रीव करिवो एसक्यूएल सर्वर रे बट एठी कोन होछि ना यू कैन डायरेक्टली रीड दैट वन एंड यू कैन यूज इट। बुझियला? यस सर। यस जदि यस हमर पार्के फाइल फॉर्मेट जदि थिबो सेतेबेले हमें फॉर पाथ यूज करबा। करेक्ट करेक्ट ओके नहले फॉर नेम सेम आज देखो तमे कंपेयर करो सेव एंड सेव एज टेबल को जेमिति तमे सेव करछो सेम तमे रीड करो। ओके, तमे जेमिति सेव करछो सेव गोटे पाथ दरकार सेति तमे फॉर पाथ यूज करिवो। ओके, एटा होची तमरो स्पार्क सेशन एटा होची तमरो पाथ हो कि नेम हो। ओके, टेबल नेम टा तबले सबले एमति रो ए जो फॉर्मेट टा हमें डिटेल रे डिस्कस करिबा जेतले मु यूनिटी कैटलॉग पढेबी। तो एबे पई तमे एतिकी मन रखता कि हमर थ्री फॉर्मेटेड स्ट्रक्चर जोटा कि एटा होची स्कीमा एटा होची टेबल। ओके, आ ये जो कैटलॉग टा टिके माने न्यू कांसेप्ट जोटा कि डेटाब्रिक्स रो तो वी विल डिस्कस दैट। ओके, हमें मोस्टली लास्ट आड़ को डिस्कस करिए एटा कि यूनिटी कैटलॉग रो कांसेप्ट। सो फॉर नाउ एटा होची टेबल तमे कंसीडर करो इट्स अ टेबल स्टूडेंट होची टेबल जोटा कि एटा हायरार्की रे अछि। यदि फॉर पाथ करियर अछि यू कैन सिंपली गिव द पाथ। ओके, डेल्टा टेबल ला पाथ करिवो ए जो पाथ अछि यू कैन गिव द पाथ। ओके, सुदीप्त कोन पचरतलो?
ନାଇଁ ସାର୍। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ ଫାଇନ୍। ସो ଆମେ ଏଇଥିଲେ ପାଥ୍ ଟାକୁ ଦବା, ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସो ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିଡ୍ ଇଟ୍। ଓକେ 2df ତ କଲୁ ଆମେ। Spark ଠିକ ଅଛି। ओके डिस्प्ले ओके एटा गोटे हमर रेकॉर्डटा अछि जेटा कि टारगेट डेटा हमें राइट करथिले डीएफ रे, इट्स अ फ्लाइट डेटा जेटा कि हमें डिस्कस करथिले पांडा रे। ओके सो दिस डेटा बट एठी कोन होछि ना वी आर यूजिंग फॉर पाथ बिकॉज़ मते ए पाथ रे मु राइट करछि। ओके दैट इज व्हाई मते पाथ यूज करली। सो इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू आर यूजिंग, तमे पाथ यूज करछो और यू आर यूजिंग ए टेबल। ओके दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक ଅଛି। So there are multiple ways of reading a delta table, creating a delta table, writing a delta table, but you have to choose your own. Okay mostly ଯଦି ତମର already suppose ତମେ କାହାର ଗୋଟେ downstream table use କରୁଛ, okay downstream means like you know some other teams ଜଣେ ତମେ raw data formation କରିକି ଦଉଛି and ତମେ ସେଟା use କରୁଛ and raw data ଟା ତମର delta format ରେ ଅଛି, so you can use this method delta table dot for path हो कि for name हो, you can use that one जोटा कि most efficient way and also तमर data टा जेतेबेले big data अछि delta table रे mostly तमर history data रहउछि, बहुत सारा data रहउछि, तो big data रहउछि से automatically तमर optimization apply करी दउछि। okay so you don't have to worry for that, ସେଥିପାଇଁ delta table ଟା is much more faster कहବାକୁ गले। okay आ ऊपर भी बहुत सारा फंक्शनालिटी हम इंप्लीमेंट कर परिबा जोटा कि हमर स्पार्क डॉट रीड टेबल ले कर परिबानी। सो दैट इज हम ग्रेजुअली तले पढिबा डेल्टा टेबल ऊपर कि डेटाब्रिक्स ऊपर, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमर जति के सब फंक्शनालिटी अछि मेथड्स अछि डेल्टा टेबल रो, दैट इज ओनली पॉसिबल इन दिस वे। जेतेबेले हम ए मेथड रे डेटा को रीड करिबा देन ओनली इट इज पॉसिबल फॉर अस टू रीड, अदरवाइज एटा पॉसिबल नै हमको से जो तार फंक्शनालिटी को इंप्लीमेंट करिबा इट इज नॉट पॉसिबल। ओके सो ସେଥିପାଇଁ I am always recommending use this one। if ତମେ create କରୁଛ table then you can go for the create table statement। okay କି select କରୁଛ that is fine, but ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ file read କରୁଛ then you have to use this one। ବୁଝିଲା? yes sir। ଓକେ यस ସମସ୍ତେ सर। ବୁଝିପାରିଲ ତ? डेल्टा टेबल टा एमती हमर रीड कराबो एमती राइट कराबो एंड यू शुड यूज दिस वे। ठीक अछि आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जोटा कि हला टाइम ट्रैवल। ओके टाइम ट्रैवल इज द मेन फीचर ऑफ द डेल्टा टेबल। ମାନେ टाइम ट्रैवल माने कोन यू कैन गो इन द पास्ट, बेसिकली से टाइम ट्रैवल माने से कोन मेंशन करछि इट इज दैट यू कैन चेक द हिस्ट्री, यू कैन गेट द हिस्ट्री डेटा, दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग टाइम ट्रैवल। ओके सो वी कैन एक्सेस द स्नैपशॉट ऑफ ईच टेबल, बेसिकली से कोन करछि ना डेल्टा टेबल रे जत्ते बळे से डाटाटा स्टोर करूछि सपोज हमें किछि चेंजेस करूछि कोइ देखैतिली मु काली कि जहाँ भी चेंजेस करूछे कि ओवरराइट कले कि हमें किछि भी अपेंड कले हमर सेतिकिटा जेसन सीआरसी फाइल क्रिएट होछि, जेथर हमें करबा सेथर से क्रिएट करिवो। ओके बट सपोज मु कहबी कि मते आज मु जहाँ भी चेंजेस कले एवरीडे मोर डाटाटा लोड होछि गोटे टेबल को मु अपेंड करूछि, बट मते दरकार कि 7 डेज पूर्व मु कोन चेंजेसटा करथिली। okay so in that case you can use this time travel method to fetch that version, say version हो कि say time stamp रो जहाँ भी डाटा थिला you can fetch it। okay तो ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଟାକୁ टाइम ट्रैवल ताको टाइम ट्रैवल कहर मेन मीनिंग हो कि तमे डायरेक्टली एटा यूज कर परिबो। बुझला एटा yes व्हाट इज टाइम ट्रैवल हमें देखिबा एटा टाइम ट्रैवल केमती काम करूची जेमती मोटा देखैली हिस्ट्रीटा दिस इज हाउ यू कैन यूज द टाइम ट्रैवल। ओके जेमती मु कहली एटा टाइम ट्रैवल। ओके गोटे टेबल रो देखिबा हमें टेबल रो देखले मोस्टली तमे बुझी परिबो, तमे टिके लिंक करो। ओके मु माने एसक्यूएल रे जहां भी कहूची ट्राई करो ताको लिंक करिया पे से पाइस्पार्क रे हमें को फॉर्मेट रे सेम जिंस हमें करछे
बट कोड इज डिफरेंट, सिंटैक्स टा डिफरेंट। ओके, एसक्यूएल में लिखिबा describe, ओके, हिस्ट्री गोटे टेबल रो नेम देबा। सपोज मु कहबी कि कस्टमर नै स्टूडेंट, जदि मु करी स्टूडेंट, ओके आसिला, ओके ठीक है, स्टूडेंट टा बोधे मु नेइथिले एथरे टारगेट डेटा एटा। ओके, स्टूडेंट टा मु नेइथिले रीड करिया पई, सेम जिंस मु हिस्ट्री देखो एठी देखिथिले दीटा रेकॉर्ड, एठी भी से दीटा रेकॉर्ड अछि। सो यू कैन यूज आइदर वे, इट्स नॉट लाइक, बट एटा कोन करबा ना आमे देखो माने बेनिफिट्स टा कोन होची एटा तमे देखि देलो, ठीक अछि। यू कैन राइट, सपोज सेम जिंस तमे यूज करियार अछि, किछि गोटे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करियार अछि, तुमको स्पार्क एसक्यूएल यूज करिया पड़िबो। ओके, दैट इज व्हाई इफ यू कैन यूज डायरेक्टली द डेल्टा टेबल एंड यू जस्ट क्रिएट वन रेफरेंस, देन तम पे इजी होबो एटा एक्सट्रैक्ट करिया पे। जे तुम ओनली रीड करिया को चाहो देन दिस इज द बेस्ट वे। डिस्क्राइब हिस्ट्री स्टूडेंट, तमरो 0th वर्जन टा कोन अछि तमरो मिलिला, तमे तापरे कोन करिवो ना ताकू ताकू रीड करिवो। रीड केमती करिवो, सपोज मते 0th वर्जन रे कोन डाटाटा थिला, आई वांट टू सी नाउ, बिकॉज़ मो डाटाटा ऑलरेडी ओवर रिटन हे जाईची, मु जाननी मो डाटा रे कोन माने पूर्वरो कोन थिला, बट मु चाहूची कि प्रीवियस वर्जन रो डाटाटा मते देखिया पे। सो यू कैन यूज लाइक दिस। ओके, तो मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट फास्ट देखे दउची, देन यू कैन यूज, सॉरी मु देखे दउची एटा स्पार्क डॉट रीड डॉट फॉर्मेट। ओके, मु कह हम कहलो डेल्टा, ओके, डॉट ऑप्शन, ओके, वर्जन, ओके ठीक है जी। टेबल हमें डायरेक्टली दे देबा, वी डोंट हैव टू गिव। हमें टेबल देले स्टूडेंट जदि देबा, मे बी फुल मेथड नहीं, ठीक अछि, इट वर्कड। ओके, तो बेसिकली हमें कोन करले कि फर्स्ट हमें एड्रेस नेले, मन अछि काली हमें कोन करथिले जेंडर गोटे ऐड करथिले परे, बट इनिशियली हमर डाटा टाइम थिला राइट। इफ यू रिमेंबर एस्टरडे हमें कोन करथिले, फर्स्ट हमें एरर रिकॉर्ड हैंडल करथिले, ताको राइट करथिले, देन नेक्स्ट कोन करथिले हम गोटे जेंडर गोटे कॉलम ऐड करथिले, देन ताको हमें राइट करथिले। तो एटा हमें कोन प्रीवियस वर्जन डाटा को रिट्राइव करथिले, बट जदि मु करंट डाटा करबी, देखो हमर डाटा कोन आसी, एटा सब लेटेस्ट वर्जन दबो सब बळे। करेंट डेटा करछि वर्जन आज टा हटे देबी मु, एटा म दरकार नै किछि। आई विल डायरेक्टली रीड इट, तमर कोन हमर गोटे जेंडर कॉलम टा आसीबो, सी जेंडर कॉलम आसिला, यस सर। ठीक अछि। तो दीटा को डिफरेंस अछि, एटा होछि करंट वर्जन रिकॉर्ड, एटा होछि प्रीवियस वर्जन रिकॉर्ड। एमती नाही कि हमें खाली प्रीवियस वर्जन रिकॉर्ड ही एक्सट्रैक्ट करि परिबा, हमें एठी जो नंबर रा वर्जन दबा से नंबर रा डाटा तुमको आउटपुट रे मिलिबो। ओके, यू कैन रीड दैट। एंड केमिति जानिबा ए वर्जन टा कोन करर अछि, यू हैव टू फाइंड बेसिकली तुम रिक्वायरमेंट तुम देखियो, सपोज किछि चेंजेस कर देछ, ओके बाय मिस्टेकली, सो यू कैन रिवर्ट इट, दैट्स नॉट एन इश्यू, तुम रिवर्ट कर परिबो, यू कैन डू दैट। ओके, फाइनली तुम कोन करियो, डिस्क्राइब हिस्ट्री कर दबो टेबल, you got the version number here, version 2 version 5 version जहाँ भी अच्छी, you can go there and you can use it here, version as of 0 version as of 2 like that। okay, ए जिनसटा समस्त बुझीला ना कार बुझीलानी डेल्टा टेबल टा। यस सर। टाइम ट्रैवल एटा, ओके, तो टाइम ट्रैवल फीचर ऑफ databricks, सॉरी टाइम ट्रैवल फीचर ऑफ डेल्टा लेक, जो कि मोस्टली पचारंती इंटरव्यू, व्हाट इज टाइम ट्रैवल। so you can simply tell that time travel means you can fetch the history records of a delta table। and how can you fetch? First you have to know the which history version, which version number you want to fetch, or which timestamp data you want to fetch। ताको जानला परे तमे सिंपली एठी ऑप्शन रे यूज करि परिबो version as of his, and we can say the timestamp as of the option अछि। तो तमर ऊपर डिपेंड करे तमे कोटा यूज करबा चाहौछ। तमे कहबे कि मते मते वर्जन जणा नाही, तो मु कहबी कि नाही मते 7 दिन पूर्व जो डाटाटा मु करथिली से डाटाटा मते दरकार। सो यू कैन सिंपली यूज एटा कि वर्स टाइम स्टैम्प एज ऑफ भी तमे दे परिबे, ठीक अछि। तो दिस इज द वे हमें आको यूज कर परिबा।
ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ? Yes, sir. ଓକେ ଓକେ, ନାଇଁ କାହାର ଯଦି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ତମେ ପଚାର। ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଓନ୍ଲି ସୁଦୀପ୍ତ ଆଣ୍ଡ ତାଶିନୀ ଦି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାକି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଦିସ୍ ଇଜ ଭେରି ଭେରି Yes, sir. ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। Yes, sir. Yes, sir. ଓକେ ଓକେ ଫାଇନ୍, ट्राए कर प्रैक्टिस कर, देखिबो डिफरेंस जेतेबेले देखिबो तमे इजीली बुझी परिबो एटा कोन मु डिफरेंस देखुची सेति पई मते कोन लागु छ एटा आइ जाउची, बट तमे तो फर्स्ट टाइम करछो ना, टिके स्लाइटली माने प्रॉब्लम्स आसीबो, बट वंस तमे प्रैक्टिस करले एंड डिफरेंस देखियो ट्राए कर, जेंति मु डिफरेंस देखिले एठी 0 वर्जन ने कोन आसी 1 वर्जन ने कोन आसी, काली हम सेम जिंस करथिले। ओके, तमे गोटे टेबल नबो, गोटे डाटा नलो, ताको राइट फास्ट करलो, तापर सेही डाटा फ्रेम रे आउ कि चेंजेस करलो, ताको आउ थरे राइट करलो। ओके, ओवरराइट करदेल, फाइन सरला गोटे प्रोसेस। सेकेंड कौन कर ताको पुणी रीड करिवो, रीड कला परे तमे कौन करिवो फाइंड आउट करिवो कि रीड कला परे तापर देखिवो कि डाटाटा कौन अछि, तमे देखियो कि लेटेस्ट डाटाटा अछि, देन दैट इज फाइन। तापर डिस्क्राइब करिवो कि चेंजेस कौन अछि, 0 1 2 वर्जन, तापर वर्जन नबो से वर्जन टाको चेंज करिवो। ओके, एमती कले कौन होछि ना, तमे जहां भी चेंजेस करलो आ जहां भी रिट्राइव करलो तमे इजीली बुझी परिवो कि मोर वर्जन कौन काम करूछि, टाइम स्टैम्प कौन काम करूछि, ए सब जिंसटा इजीली तमे बुझी परिवो कंपेयर करले। नहले कौन हो ना, एटा टाइप रे तमे टिके माने गोलमाला लागियो तुमको, बिकॉज़ एटा सब न्यू कांसेप्ट तमे आगर केबे सुनि न। ओके, टाइम ट्रैवल हो एटा सब जिंस हो जो क्वेरी जानि छ एसक्यूएल क्वेरी, बट ए जिंसटा समथिंग न्यू, तो ए जिंसटा को मोस्टली इंटरव्यू रे कोन पचारंती, थ्योरेटिकल पचारंती व्हाट इज टाइम ट्रैवल, रादर देन तुमको कि कहबो कि नहीं एटा को प्रैक्टिकली करो, बिकॉज़ प्रैक्टिकल एटा पॉसिबल नहीं, जोटा कि इंटरव्यू रे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, कामर तो पॉसिबल बट इंटरव्यू रे पॉसिबल नहीं। तो से केसेस रे सेमाने पचारंती कि हाउ टाइम ट्रैवल वर्क्स, मते गोटे वर्सन को जिया पे कोन तुम यूज करो, तुम कहो वर्सन एज ऑफ ऑप्शन यूज करो, टाइम स्टैम्प जिया पे टाइम स्टैम्प एज ऑफ यूज करो। ओके, ए जो छोट छोट क्वेश्चन अछि यू हैव टू नो, क्वेश्चन एथरे इंटरव्यू रे न पचारले भी यू हैव टू, जतबे टाइम ट्रैवल आछि माने यू हैव टू आंसर, यू हैव टू इंक्लूड ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो दैट इंटरव्यूअर जानि परिबो कि हां यू नो दैट, यू नो द कांसेप्ट एंड यू हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन दैट। Sir, ओके, so time travel में deep अच्छा अच्छा time stamp of as of okay sir, got it. दीटा अछि हमर टाइम स्टैम्प एज ऑफ वर्सन एज ऑफ, एटा टाइम स्टैम्प एज ऑफ टा मु देखैनी, सेम जिंस तमे एटा कॉपी कर देलो। ओके, टाइम स्टैम्प एज ऑफ रे डायरेक्टली लिखि दो। ओके, सो आई विल टेल यू। सर हम्म सर ଆପଣ जो वर्सन एज ऑफ करछन्ते एडा मु माने अथर रिवर्ट करियो चाहि माने केमति होबे सर? कहबी अछि आगे नेक्स्ट अछि। ओके ओके, एटी हमर टाइम स्टैम्प एज ऑफ करिवो। ओके, ओके एवडा सब माने आर सिंटैक्स टिके मन रहइबोनी। ओके, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ गूगल, बट ए नेम टा मन रखिता। सिंटैक्स गुडा कोन होय छै ना, बेसे बेले टाइम स्टैम्प एज ऑफ टा केमति लिखा थाए, एटा कोन देखो टी टा कैपिटल आ ए टा कैपिटल ओ टा कैपिटल, तो सम टाइम्स एटा टिके प्रॉब्लम हुए, बट यू शुड रिमेंबर दिस वर्सन एज ऑफ टाइम स्टैम्प एज ऑफ, यदि किछि भी हला चैट जीपीटी तो अछि, यू कैन सर्च इट। ओके, सेम जिंस हम स्टूडेंट कले वी कैन रीड इट, जोटा कि हमर फर्स्ट इनिशियल डाटा हमको दबो से। ओके, विदाउट जेंडर, ठीक है जी, विदाउट जेंडर डाटा दला, टाइम स्टैम्प एज ऑफ टा यूज करले सिंपली मु कॉपी कर देले, आई डोंट हैव टू गिव एनी अदर ऑप्शन, सिंपली मु एटा कॉपी कर देले। फाइन, ठीक अछि। एठी हमर कोन होछि कि एठी हमर स्पार्क डॉट रीड डॉट टेबल कर देले, ऑप्शन एति देले, देन वी आर लोडिंग द डेटा, देन वी आर यूजिंग टाइम स्टैम्प एज ऑफ, देन वी आर यूजिंग वर्सन एज ऑफ। ओके, देन हमर कोन होछि ना, सिलेक्ट स्टार हम एसक्यूएल रे कोन करछि करछु, एसक्यूएल भी जमे ट्राई करे यूज करिया पई, दैट आल्सो यू कैन डू। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल वर्सन एज ऑफ 3, एंती स्टूडेंट रे भी तमे एंती कर परिबो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वर्सन एज ऑफ। ओके, दैट इज आल्सो यू कैन डू एनीथिंग आइदर वे। ओके, एंती किछि नै, बट सेटा कोन होछि ना, गोटे तुमको डेटा फ्रेम क्रिएट करबो, एटा तुमको गोटे कोन तुमको स्पार्क एसक्यूएल यूज करिया पड़िबो, डिफरेंस होछि एति की लिखि दोछि, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, वर्सन एज ऑफ 0। ओके, सेम जिंस हमको देखले, सेम तमे टाइम स्टैम्प ता तमे निजे प्रैक्टिस करिवो। ओके,
Now you can use restore and vacuum details basically. So delta table रे कौन होची ना हमर देखो delta table रे कौन होची ना हमर सब history records गुडा को हम गोटे snapshot हिसाब रे रखुछ स्नापशॉट माने इट्स लाइक गोटे तार गोटे कोन गोटे कॉपी टाइप रो ओके माने एटा फिजिकल कॉपी नुहे इट्स अ स्नैपशॉट ओके बेसिकली तांकर डेटा ब्रिक्स रो बैक एंड जोटा यूज होउची जो कि दे आर कीपिंग ए स्नैपशॉट माने दे आर कैप्चरिंग द डेटा बेस्ड ऑन द जहां भी लॉग्स हमर क्रिएट हला से अनुसार से गोटे डाटा रो स्नैपशॉट रखचंती ओके डेल्टा टेबल टा बट जदि से स्नैपशॉट आदि हम अधिक 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 रखी जिबा डेफिनेटली हमर कोन हबो मेमोरी टा बहुत सारा रखिरो माने कंज्यूम हबो ना गोटे टेबल पे हमें मल्टीपल थर कोन करछे ताको तापर ओवरराइड करछे जहां भी करछे सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू कंज्यूम मोर मेमोरी ओके तो से केसे तमे कोन करबो ना तमे तमे चाहू तो ताको वैक्यूम करिया पे दैट आल्सो यू कैन वैक्यूम द डेटा ओके एंड रिस्टोर करबो देखो रिस्टोर कोन होचे रिस्टोर टू वर्जन डीएफ डॉट रिस्टोर टू वर्जन 4 df dot restore to timestamp so basically तमे दे ट्राई तमे जानि गलो एठी फर्स्ट ऑप्शन तमे रीड करलो देन तमे कोन चेक करलो कि मते से वर्जन डाटा रे कोन देखौछ ओके से वर्जन ने मते देखौछ कोन डेट ओके spark dot read dot then version as of देखि देलो then you got the data then तमे तब को करबो ना df dot version माने कोन तमे ताको रिवर्ट करिया पे restore to version यूज करिवो ओके df dot restore to version 0 ओके सो सेटा कि df dot restore to the timestamp then timestamp टा दबो तो तमे कोन कलो ना डेटा फ्रेम को सेही वर्जन को तमे रिवर्ट कर देलो ठीक अछि एठी कोन करिया ना हमें ओके एठी df dot restore to version कला ठीक अछि एई df टा कोन हमरो सी and that is only possible in here ये जो डेल्टा टेबल टा हमर क्रिएट हेछि दैट इज ओनली पॉसिबल ठीक अछि तो डीएफ हम क्रिएट करथिले सो डीएफ ही हमें रिस्टोर करि परिबा अलगा हमें सब रीड करि परिबा यूजिंग स्पार्क हो कि हो हमें रीड करि परिबा बट हमें वर्जन को माने रिस्टोर करिया पई वी हैव टू यूज दिस ओके हमको आइदर डेल्टा टेबल एमती यूज करि परिबा रिस्टोर टू टाइम स्टैम्प भितर किछि भी दबा हमें ओके टाइम स्टैम्प दे परिबा और एल्स हमें कोन करिबा कि दिस इज आल्सो यू कैन डू और एल्स हमें परसेंटेज ऑफ एसक्यूएल रो भी यूज करिबा रिस्टोर ओके restore as of 0 for version table student okay this is also you can do restore करिया ପାଇଁ anything okay जोटा कि SQL query रे भी यूज करि परिबा for delta tables and directly delta table को रीड करी कि ता रेफरेंस ऊपर जब रेफरेंस क्रिएट करछे ता ऊपर भी हमें ए रिस्टोर टा अप्लाई कर परिबा so that is up to you तमे केमिति रिस्टोर करियो चाहछो एटा बुझियला सो जदि how we are रिस्टोर restoring कले डेल्टा टेबल रे पूरा डाटाटा जीरो होई माने जोड़ा नॉर्मली इनिशियल फेज रे जोड़ा थिला से डाटाटा हेजो सेटा हे जिवो ओके जोटा हमें स्पार्क डॉट रीड करछे त बळे एटा अपन कोन लेटेस्ट वर्जन रिकॉर्ड देखौची बस रिस्टोर मु कर देबी से को करबो ना सेही वर्जन डेटा मत देखिबो तो अगेन आपको जदि हमें हिस्ट्री करबो तो नंबर 3 रे आसीबो कि से नंबर 1 या नंबर 2 रे से डाटाटा आसी आ गुडसरा रिस्टोर नहीं हेछे हमें राइट करने ना लेट्स ट्राई दैट ओके रिस्टोर वर्जन और वर्जन ऑफ table part syntax error restore the part syntax नहीं कैसे restore command with version of the clause here is the correct code restore table version okay restore table version as of restore table
और version as in 0. ओके तापर कौन करिबा ना परसेंटेज ऑफ एसक्यूएल डिस्क्राइब हिस्ट्री स्टूडेंट ओके तो सी कौन हला ना हमर 23rd वर्जन टा गोटे क्रिएट हे गला ओके रिस्टोर वर्जन तो सेही टेबल ऊपर आबे कले तो सी गोटे कौन करला ना वर्जन 2 टा ऐड कर देला ठीक अछि and you can see cooperation eta it's a restore operation it a write operation it append operation all this information you can get here okay and operation कौन है गला हमरो एटा राइट माने append operation एटा वर्जन 0 टा टाइम स्टैम्प नल है गला इसी ऑपरेशन हम रिस्टोर करले बुझियला एटा Yes, sir. ओके तमे एटा ट्राई करो तमे सबल ट्राई करो एटा एटा प्रैक्टिस करो टेबल रे एनी चेंजेस नॉर्मल चेंजेस जेमति करछो तमे ओके गोटे कॉलम चेंज करलो कि कॉलम रो वैल्यू अपडेट कर दो किछि भी कर दो ताको राइट करियो तीन चार थर राइट करो गोटे वर्जन को तमे जानिछो को वर्जन कोन करछो ओके ताको तमे पुनी रिवर्ट करो ताको तमे पुनी कोन फाइंड आउट करो टाइम स्टैम्प यूज करो ऑल दिस थिंग तमे ट्राई करो ओके ओके तमे एनीथिंग लाइक पाइस्पार्क यूज करि परिबो एसक्यूएल यूज करि परिबो बट आई वुड रिक्वेस्ट लाइक ट्राई करो I'd say like try करो both PySpark और SQL try करो okay so next okay just a second okay so basically we are using कौन करछे हमें restore करछे restore to version okay similar to that हमें vacuum कौन करछे तो बोले कौन पे vacuum करछे सपोज मते कहयार अछि कि देखो हमें दे डाटा टा दी अनलिमिटेड टाइम पे गोटे हमें माने कोन ए जो चेंजेस करूछे डेफिनेटली से कौन कला हमर जति के सब वर्जन हमें क्रिएट करछे तो एटी सेतिकिटा वर्जन से रखिला ना ए वर्जन डाटा तुमको स्टोर कला स्नैपशॉट टा बेसिकली फिजिकली स्टोर करनी स्नैपशॉट स्टोर करछि ओके स्नैपशॉट माने इट्स नॉट अ फिजिकल वर्जन ओके एटा गोटे तार चेंजेस मॉडिफाइड डाटा टाइप रो से तुमको स्टोर करछि राइट तो सेतिर स्नैपशॉट से गोटे कैप्चर करछि सो दैट ताकू यूज करिकि आमे से वर्जन को रिवर्ट करि परछे एटी हमें रिवर्ट कले माने रिस्टोर कले सेही वर्जन को कोन पई बिकॉज़ हमर डाटा टा ऑलरेडी स्टोर अछि राइट बट गोटे प्रोब्लेम होची कि जदि हमें अधिक अधिक डाटा एमती रखिबा सपोज बिकॉज गोटे टेबल ऊपर बहुत ट्रांजैक्शन करछे सेल्स टेबल हे गला सेल्स टेबल यू कैन इमेजिन हमर केते गोटे दिन रे केते ट्रांजैक्शन होची तो हमें जे सब ट्राई करिया कि ताकू रखिबा पई सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू कंज्यूम मोर मेमोरी राइट सो इन दैट केस इफ यू वांट हमें ताको वैक्यूम कर परिबा सो वैक्यूम कमांड कौन करिया वैक्यूम टेबल नेम देन वी हैव टू कीप लाइक मते 7 दिन रखियार अछि कि 15 दिन कि 30 दिन सपोज 30 डेज करियार अछि तो 30 डेज पूर्व जहां भी चेंजेस अछि जहां भी हमें हिस्ट्री अछि ताको हमें रिमूव कर देले ताको बेसिकली वैक्यूम कर देले वी डू नॉट हैव एनी हिस्ट्री रिकॉर्ड्स प्रायर टू 30 डेज ओके so this is how the vacuum so what is the restore command and what is the vacuum command in delta table so this is the restore command जोटा कि restore करछे गोटे स्पेसिफिक वर्जन हो कि स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प रे देन हमें ताको वैक्यूम करछे तो वैक्यूम टा कोन पे यूज होची हमें ताको वैक्यूम टा मोस्टली हम यूज होची हमें गोटे पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प रे ताको वैक्यूम करछे ओके सर ମୁଁ ଯଦି vacuum ରେ ଗୋଟେ version ଦେଲି हम्म 4 to 5 ଯାହା ବି ତ ସେଟା କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ରିଷ୍ଟୋର କରିପାରିବେ नहीं रिस्ट वैक्यूम पर रिस्टोर कर परिबे ना सर ओके बट सेडार वर्जन स्टोर हेथिबो ना सर हिस्ट्री वर्जन रो स्टोर हेथिबो ताको से वर्जन यूज करी तो रिस्टोर नहीं करी सेति हबो पे ना तो वैक्यूम करले ना वैक्यूम माने कोन होची जे वर्जन टा तमे अछि देखो हिस्ट्री वर्सन अच्छी वर्सन और टाइम स्टैम्प दीटा को डिपेंड करे तुम ए दीटा ऊपर ना एटा आ सहित रिलेटेड एमती नाही कि हमें टाइम स्टैम्प टा रिमूव कर देले वर्सन टा रहइबो कंप्लीट टा रिमूव हो जे ना ए वर्सन टा ए टाइम रे हमरो
चेंजेस ହେଇଛି ତ डेफिनेटली ତମେ ଯଦି version remove ହେଲା टाइम स्टैम्प ରହିବନି ନା कि टाइम स्टैम्प रिमूव ହେଇଗला version ହିଁ ରହିବନି इट्स अ क्लियर थिंग तो ओके बेसिकली ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ କରିବ ସେ ଟାଇମ हम्म ଷ୍ଟାମ୍ପ ସହିତ ସେ ଡାଟାକୁ ବି ସେ ମାନେ ଡିଲିଟ କରିଦଉଛି। ଟାଇମ करेक्ट ଷ୍ଟାମ୍ପ करेक्ट ଭର୍ଜନ ମାନେ ସେ ସବୁ ହିଷ୍ଟରୀରେ। ଯାକ ହଁ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ କଣ ମାନେ ବେସିକାଲି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଲାଇକ ୟୁ କ୍ୟାନ ନଟ୍ ରିଭର୍ଟ ଇଟ କାହିଁକି ନା ଏବେ କଣ ହଉଛି ଆମର ଅଛି କାଲି ଆଜିର ଡାଟାଟା ଅଛି ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ ରିଭର୍ଟ ଇଟ ସପୋଜ ଆମର 30 ର ରେକର୍ଡ ଆମେ 30 ରେ ଏଇ କୋଡଟା ଚଲେଇବା ତ ଡେଫିନେଟଲି 22 ର ରେକର୍ଡଟା ଆମେ ତାକୁ ରିଭର୍ଟ କରିପାରିବାନି କାହିଁକିନା ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ଚଲେଇ ଦେଇଛେ ତ ସିଏ କଣ ଟିଲ୍ 23 ଆମ ଡାଟାଟା ରହୁଛି ଟିଲ୍ 22 ଟା ଆମର ଡାଟାଟା କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଓକେ ଯାହା ବି ଚେଞ୍जेस କରିଛେ तो जहां भी हिस्ट्री में चेंजेस କରୁଛେ इट इज नॉट देयर ହେଲେ ଯଦି ୱାନ୍ସ ଆମେ ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ୟୁଜ କରିବା ଦେନ୍ ଆମେ ତାର ଓରିଜିନାଲ ଭର୍ଜନ ଯୋଉଟା ଅଛି ଜିରୋ ସେଇଟାକୁ ବି ତମେ କରିପାରିବାନି ସାର୍ ରିଷ୍ଟୋର କରିପାରିବାନି ବେସିକାଲି। ନାଇଁ ସେଇଟା କରିପାରିବେନି କରେକ୍ଟ ତ ସେଥିପାଇଁ ଗଟ୍ ୟୁ ଇଟ୍। ହାଭ ଟୁ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ମେंटेन କର ବେसिକାଲି ଏଟା କଣ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ओके तमे तम यूज केस अनुसार तुमको डिसाइड करिया पड़ो केते दिन रो वैक्यूम तुम केते दिन रो माने वर्जन रखिया पड़ो तुम प्रिफर करछो सेल्स डेटा अछि सपोज गोटे कस्टमर सेल्स डेटा मु कहबी कि नै कस्टमर रो ओनली मु लास्ट 1 ईयर रो डेटा रखिया चाहूँ नॉट मोर देन दैट सो यू कैन गेट ऑल सब कस्टमर रो लास्ट 1 ईयर रो डेटा तुम ताकू मेंटेन कर परिबो जहाँ भी चेंजेस होची कोन होची ओके लाइक दैट सर रिस्टोर वर्जन ଟା ଟିକେ ସ୍ଲାइटली କହିए सर कोटा कोटा रिस्टोर वर्जन एटा वर्जन ଟା सर ଟିକେ ବୁଝିଲେନି सर एक्चुअली। रिस्टोर टू वर्जन रे हाँ सर। हाँ माने ए वर्जन टा को हम रिस्टोर कर दबा ना जोटा सेम जिंस एटा जोटा हमें एटा जोटा जेमति रिस्टोर टू टाइम स्टैम्प कले ई टाइम स्टैम्प रे जो डाटाटा हेइथिला थिला हमर बेसिकली ताको हम रिस्टोर कर देले दैट मींस जो करेंटली डेल्टा टेबल क्रिएट हेइची ताको हम सेही डेल्टा टेबल रे रिस्टोर कर देले जेमति हम ओवरराइट करछे अपेंड करछे रिस्टोर भी गोटे ऑप्शन अछि ओके एबे जदि मु एटा रिस्टोर रन कर देले एबे जदि मु एटा रीड करले ना देखले रीड करली एते बेले से कोन मत देखेला एबे करंट डाटाटा मत देखेउची से एटा कोन रिस्टोर कर देलु रिस्टोर करला परे मु एटा कोन रीड करबी एटा मु डायरेक्टली मु कोन करबी रिस्टोर कर देली मु एटा रीड करबी देखो मते एई डाटाटा ही देखेबो ओके एरर रेकॉर्ड देखेला हम जेंडर कॉलम आ नाही इनिशियली हमको जेंडर कॉलम देखौतला ठीक अछि सो दिस इज व्हाट आर द रिस्टोर ऑप्शन रिस्टोर कला बेल को हम कोन होछि ना आइदर रिस्टोर ए वर्जन नंबर को हमें रिस्टोर करिवा सपोज मोर वर्जन नंबर जणा नाही फॉर एग्जांपल ओके आई डोंट नो द वर्जन नंबर तो मु डायरेक्टली यूज करी टाइम स्टैम्प यूज कर परिबे ओके डायरेक्टली मु ताको टाइम ओके स्टैम्प यूज कर परिबे तो रिस्टोर ଆମେ जो भी वर्जन करता से ओवरराइट हो जाଉଛି सर ସେଇଟାରେ। करेक्ट करेक्ट ओवरराइट हो जाउची बट ऑपरेशन ता तमर रिस्टोर रहबो इथे हम राइट ऑपरेशन रहउची यस सर माने यस सर। लॉग रे तमर रिस्टोर रहबो बट से ओवरराइट कर दोची एठी जीरो वर्जन आउ टू वर्जन बोथ हैव द सेम रिकॉर्ड ओके सर गॉट इट। ओके सो समस्त बुझीला वैक्यूम एंड रिस्टोर डेल्टा टेबल रे सर ସେଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କି ବର୍ଷନ ଇନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ 7 days ତାର ଟିକେ ମିନିଂ ଟିକେ ଆଗରୁ ବୁଝିଦେବି। तो वैक्यूम एटा तो 7 days यस सर। so basically se कहूची कि it removes the data files that are no longer referenced by a delta table version in last 7 days so basically एटा कोन डिफॉल्ट गोटे रहउची सपोज मते वैक्यूम करियर अछि लास्ट 7 days को रखी की ता पूर्वरु जहां भी अछि मते ताको वैक्यूम करियर अछि ओके सो बेसिकली they could remove the data file that is no longer referenced by data table version in the last 7 days so basically कौन हमें return करिए vacuum table name return 168 hours तो 24 into 7 168 तो से कहूची कि हमें कौन ए टेबल रे वैक्यूम कर दबा एंड खाली रिटर्न करिबा लास्ट 7 days रो डाटा टाको हमें रिटर्न करिबा ओके तो 7 days पूर्वरु जो डाटाटा हमर थिला जो वर्जन डिटेल्स हमर थिला कि जो हमर डाटा को हमें कैप्चर करथि लिस्ट डाटा ताको हमें कंप्लीटली रिमूव कर दबा तो हमें चाहिले भी ताको रिवर्ट ही कर परिबानी ओके तो जदि हमें वैक्यूम रन करंती काहे ना गोटे हमें कोन सब प्रोजेक्ट रो गोटे गोटे थाए कि हमर गोटे स्पेसिफिक बजट थाए ओके कि वी कैन मैक्सिमम यूज दिस मेमोरी तो सेही मेमोरी पे हमें जतले यूज करिबा वी हैव टू यूज दिस वैक्यूम कमांड vacuum table name return 168 hours that means हमें ओनली 7 days रो डाटा टाको स्टोर करिबा
एंड ता पूर्व जहाँ भी चेंजेस होइछि जहाँ भी वर्जन अछि वी हैव टू डिलीट वी हैव टू वैक्यूम दोज इंफॉर्मेशन सेटा होछि तमाने सर एडे डेज नहीं दे परियनि कि ना माने आवर्स देबाक पड़िबो सर नहीं नहीं डेज भी दे परिबो इट्स नॉट एमती किछि नै 160 आवर तो बेसिक फॉर्मेट अछि हो ओके यस सर अंडरस्टूड कना डेज देले देखो डाटाटा तमरो जदी माने एवरी मिनिट की एवरी आवर रे प्रोसेस होउथिबो ओके तो सेते बेले कोन होबो ना तमे सेते यूज कर परिबो माने कोन डेज देले कोन सेही डेज देन दबो तम पर तुम कहबी कि नहीं मते गोटे आवर जाई डाटा को रिट्राइव करे अछि कि ये करे अछि देन आई कैन डू दैट 168 आवर्स तो आवर टा देले कोन होछि ना डेटा कंप्लीट 24 आवर को रिफर करछि राइट बट आवर टा कोन रिफर करछि गोटे स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प को गोटे दिन रे 24 आवर्स रहउछि दैट इज व्हाई इट इज बेटर टू गिव 160 आवर्स ओके यस सर ठीक अछि ओके सो नेक्स्ट विल डिस्कस ओके एटा मु खाली काजी कांसेप्ट पढे दोछि काली हमें प्रैक्टिकल करबे सर ओके सो एससीडी टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ठीक अछि सो एससीडी टाइप 1 एससीडी टाइप 2 एससीडी टाइप 3 जोटा कि हमरो स्लोली चेंजिंग डायमेंशन रहउछि सो एससीडी टाइप 0 एससीडी टाइप 1 एससीडी टाइप 2 एससीडी टाइप 3 हमर रहउछि तो एससीडी टाइप 0 एंड एससीडी टाइप रो 4 जोटा एटा मोस्टली एते यूज होउनी माने बहुत माने कम यूज होउछि सेति पे मोटा माने कंसीडर करिनी तो एससीडी टाइप 0 होउछि कोन कि ओनली स्टैटिक डाटा हमर रहउछि ओके आमे ताको आमे डाटाटा सेमति रहउछि आमे काई ताको चेंजेस करने किछि भी करने ओके वी आर नॉट चेंजिंग द डेटा दैट इज व्हाट एससीडी टाइप 0 एंड एससीडी टाइप 1 माने होउछि ना ये सब बळे हमर करंट रिकॉर्ड रखुछि माने सपोज सपोज आज तुम कौन कर आज तुम गोटे रेकर्ड तुम परचेज कल ओके ठीक अच्छे तुम रेकर्ड टा मुझे स्लोली चेंजिंग डायमेंशन वन टा कौन रोचे तो तुम आज गोटे फ्लिपकार्ट रो गोटे प्रोडक्ट परचेज कल देन तुम गोटे रेकर्ड ऐड है कि दैट दिस कस्टमर हैज परचेज दिस प्रोडक्ट ओके ठीक अच्छे तो तुम गोटे परचेज रेकर्ड गोटे ऐड हो गला देन तुम कौन कल ना आउ गोटे नेक्स्ट मंथ रे आउ गोटे प्रोडक्ट परचेज कल ओके देन से कौन ना जो प्रीवियस रेकर्ड अच्छी से रेकर्ड टा ए रेकर्ड सहित ओवरराइट हो गला तो बेसिकली से कौन करछ ना लास्ट तुम जहां भी परचेज करछ सब लास्ट रेकर्ड टा तुम कैप्चर करछ एंड जहां भी हिस्ट्री रेकर्ड होची सेटा कैप्चर करूनी दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग इट एज एससीडी टाइप 1 तो स्लोली चेंजिंग डायमेंशन टाइप 1 तो टाइप 1 रे कोन होची ना सब तुम लेटेस्ट रेकर्ड टा ही रहउची गोटे कस्टमर हो कि एनी रेकर्ड हो स्टूडेंट डिटेल्स हो प्रोडक्ट डिटेल्स हो जहां भी हो एटा सब सिंगल रेकर्ड रखुची एंड जोटा कि लेटेस्ट रेकर्ड हो हमको किछि हिस्ट्री रे किछि काम ही करियार नै ओके दैट इज कॉल्ड एससीडी टाइप 1 सो एससीडी टाइप 1 मु लिखि दोची बिकॉज़ एटा को ये रखले बुझ परिबनी आई विल जस्ट क्रिएट अनदर नोटबुक जस्ट अ सेकंड फाइल क्रिएट कर दी डाटा ओके सो एठी कोन होची ना हमर एससीडी टाइप्स में करतबा ओके एटा होची हमर एससीडी टाइप्स रे कोन होची ना टाइप 1 ओके ओनली गिव current record or latest record okay okay only keep current record or latest record that is SCD type 1 ठीक अछि एटा सब बेले जहां भी रेकॉर्ड हे गला हमर सेटा अपडेट हे जिवो सब बेले दैट इज हाउ वी आर कीपिंग बेसिकली एटा गोटे टाइप्स अछि को प्रोजेक्ट रे हमें एससीडी टाइप 1 फॉलो करछु को प्रोजेक्ट रे हमें एससीडी टाइप 2 फॉलो करछु दैट डिपेंड्स ऑन बट यू नीड टू नो तमरो कोटा यूज करिया पड़ो यू हैव टू अंडरस्टैंड so basically SCD type 1 it is only keeping the current record SCD type 2 को करछु ना it keeps
current record and history record okay ठीक ଅଛି then SCD type 3 it keeps only current and last record ठीक ଅଛି ଏଟାକୁ ତିନିଟାକୁ ପଢ you can understand କି actual meaning ଟା କଣ SCD type 1 type 2 ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ implement କରିବା we can understand properly କି ସେଟା କେମିତି ଏଟା implementation ହଉଛି meaning ତ ବୁଝିହେଲା SCD type 1 type 2 meaning ଟା ଖାଲି ବୁଝ then ଆମେ Sir, gradually ବୁଝିବା କେମିତି implement ହଉଛି କଣ keeps ହଉଛି only current and last record means current record and previous record. previous record okay last record ଯୋଉଟା previous record ଠିକ ଅଛି previous record ଯେତେବେଳେ ବି suppose ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ record insert ହେଇଗଲା ସେ କଣ କରିବ ନା ଏ record ଟା ଯାହା current ଏବେ ଅଛି ତାକୁ previous ରେ store କରିଦେଲା and new record କୁ current ରେ insert କରିଦବ that is how the process okay ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ଏଠି ଆମର ଯାହା ବି ଆସିଲା ଗୋଟେ ଆମର primary key suppose ଆମେ ତମେ merge statement କାମ କରୁଛ କି ନାହିଁ Yes, sir, merge କରୁଛୁ କାମ କରୁଛୁ। କରୁଛ okay merge ରେ ତମେ କଣ କର basically tell me ଗୋଟେ ଟେବୁଲ କୁ ନେଇକିରି ତାର ଯୋଉ ଡାଟା ଅଛି on the basis of join କରିକିରି ଅନ୍ୟ ଡାଟାଟା ଲୋଡ କରୁଛୁ load କରୁଛ right target merge table. ଯେମିତି ତମେ କଣ କରୁଛ merge into table using another table name then ଯାହା ଉପରେ on condition apply କରୁଛ ଯୋଉଟା କି common column ଯାହା ବି ଅଛି then ତାପରେ insert DML କରୁଛ କରୁଛୁ। କି ହଁ DML ଯାହା ବି when matched କରୁଛ ନା ମାନେ କଣ Yes, ଅଛି sir. match if not like କଣ insert if When not matched and update if matched ଏଇ yes, ଜାଗାଟା sir. ଅଛି ସେଟା ହଁ ସେ ଯୋଉ update କରୁଛ ଯଦି ଆମର matching ହଉଛି then ତମେ ତ କଣ କରୁଛ update କରୁଛ right so that is what the concept of this SCD type 1 ତମର ତ matching record ଆସୁଛି ତମେ update କରୁଛ ନହେଲେ ତାକୁ insert କରୁଛ match କରୁନି ତମେ insert କରିବ that is basic ଜିନିଷ ଆମର ଏଥିରେ SCD type 1 type 2 type 3 ତାର କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ଯେତେବେଳେ କିଛି ରେକର୍ଡ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍ ଦେଖ ଇନସର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛୁ ଇନସର୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ଇନସର୍ଟ କଣ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଆମେ ଇନସର୍ଟ କରିଦେବା ଗୋଟେ ଟେବଲରେ ଗୋଟେ ଇନସର୍ଟ କରିଦେବା ବଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଆସିବ କି there will be a concept of କି duplicate records ଯଦି ଆମର duplicate record ଟା entry ହେଇଗଲା then definitely ଆମର huge problem ଆସିବ ନା why we want to like ଆମେ କଣ merge କରିବା ଗୋଟେ duplicate record ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା when matched update କରୁଛୁ so match update କରିବାର main meaning ହଉଛି କି ଆମେ ଚାହୁଁନେ କି we want to keep any duplicate records ତ duplicate record ଅଛି ଆମେ ତାକୁ update କରିଦବୁ ଓକେ ଯଦି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଫାଇନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ତ ଇନସର୍ଟ କରୁଛେ ଯୋଉଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ନାହିଁ ଆମେ ଇନସର୍ଟ କରିଦେବା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଯଦି ସେମ୍ ପ୍ରାଇମାରୀ କିର ଗୋଟେ ଅଲଗା ରେକର୍ଡ ଆସିଲା ଦେନ୍ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛେ ତାର ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି ଅଲଗା ରେକର୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ଅଲଗା ରେକର୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି ଦେନ୍ वी आर ଇଗ୍ନୋରିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଦି ଅଲଗା ସବୁ ରେକର୍ଡ ସେଇ ପ୍ରାଇମାରୀ କିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ଦେନ୍ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ତାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଦଉଛୁ ମାନେ ସବୁ ଯାକ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ କରିଦଉଛୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସେଇଟା କଣ କହିବା ଆମେ ଏସିଡି ଟାଇପ 1 ଓକେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛୁ बट एससीडी टाइप 2 रे इट्स स्लाइटली डिफरेंट कोन होची ना हमें तो मैच होची सबले आर ई कांसेप्ट जहां तुम मर्ज पढिछ आबे मर्ज ही यूज करिबा बट अब एटा गोटे कांसेप्ट हमें यूज करिया मर्ज करिया माने मर्ज रे डिफरेंट वे अछि तमे कोन मर्ज इनटू टेबल यूजिंग कोन जो भी गोटे टेबल यूज करछो सोर्स ठीक अछि मर्ज इनटू टारगेट करिया हमें ओके टारगेट करिबा यूजिंग इति की on जहाँ भी हमें source dot column 1 एमती लिखुचे ना Yes, sir. target dot column 1 ओके एमती हमें लिखुचे then finally when When matched, हाँ. ओके एमती करूचे Yes, sir. ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ କମନ ଆ ପାଇଁ ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଓକେ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆମେ କରୁଛେ ନା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ହବନି वी आर डेफिनेटली वी आर गोइंग टू इनसर्ट बट प्रॉब्लम होची एआर ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି वी आर अपडेटिंग एवरीथिंग सो ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଅପରେସନ ଟା କଲେ दैट इज ए एससीडी टाइप 1 ଏଟାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କହିବା କି we can say that it is SCD type 1 okay this is what called SCD type 1 এটা হচ্ছে SCD type 1 because ଆମେ अपडेट କରୁଛେ ସବୁବେଳେ ଆମେ अपडेट କରୁଛେ ଯାହା ବି ଲାଇଲା ଲାଟେଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ମତେ ଆଇଲା ଏଇ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ अपडेट କରି ଦଉଛି ଓକେ आई एम नॉट चेकिंग एनीथिंग ମୁଁ अपडेट କରି ଦଉଛି बट କିଛି କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରେ କଣ ଅଛି ନା ସେମାନେ କରନ୍ତି କି we need the history record as well ତ ସେ କେସେସ ରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଲଜିକ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ତ ଆମେ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ମତେ ପ୍ରିଭିୟସ ରେକର୍ଡ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ରଖିବାର ଅଛି ଓକେ ସୋ ହାଉ वी आर डूइंग दैट ଆମେ ଏଟା କାଲି ଦେଖିବା ଯୋଟା ଡିटेଲ୍ସ ରେ ମୁଁ ପଢେଇବି ଦେଖେଇବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେମିତି କରାଉଛି बट व्हाट एवर यू हैव डन टिल नाउ तमे मोस्टली एससीडी टाइप 1 ही करছো
ओके टाइप 2 रे हमें कोन करछ ना हमें हिस्ट्री डाटा को मेंटेन करबा ए जो मैच करबा बेसिकली हमें कोन करबा अपडेट करबा बट इंसर्ट भी करबा both the things we will be doing so that is what the SCD type 2 yes sir ओके understood ठीक अछि तो एटा को तमे तो एटा तो मोस्टली मन थिबो मर्ज टा बट या मर्जिंग काली हमें यूज करबा जोटा के डायरेक्टली हम यूज करछ हम मर्ज ता कोन पे यूज करछ माने यू नो दैट कोन पे हम मर्ज यूज कर हमर तो इंसर्ट अछि व्हाई वी आर यूजिंग मर्ज सर ଗୋଟେ मल्टीपल डीएमएल स्टेटमेंट गोटे थोरे करि पारे सिंगल हिट रे ओके करेक्ट ओके सो मल्टीपल सेटा हमें सिंगल ईयर कर परिबा एंड अनदर थिंग इज डुप्लीकेट भी हमें ताको अवॉइड भी कर परिबा ओके एंड अनदर थिंग इज जेतेबेले हमें लोड करूचे वी डोंट हैव टू माने इंक्रीमेंटली हमें लोड करूचे गोटे होची फुल लोड गोटे इंक्रीमेंटल लोड काले एटा कहि देबी ओके तो ए जिंसोटा एटा होची प्रैक्टिकल जिंसो ओडा सब जाको ओके केमते प्रोजेक्ट रे कि मतलब हमको प्रोजेक्ट रे किछ ओटा एक्सप्लेन करार अछि माने कांसेप्ट ठीक अछि बट सपोज तुमको गोटे प्रोजेक्ट लेवल रे किछ गोटे एक्सप्लेन करार अछि कि तुम प्रोजेक्ट टा करिछ सो व्हाट यू आर इंप्लीमेंटिंग यू कैन टेल दैट डायरेक्टली एसडी टाइप 2 आई हैव डन सो दे विल अंडरस्टैंड कि हां तुम एसडी टाइप 2 करछ माने दिस इज गोटे गोटे एटा गोटे प्रोजेक्ट रो गोटे पार्ट तुम डाटा रीड करछ तापर किछि भी अप्लाई करछ ट्रांसफॉर्मेशन देन ताको एसडी टाइप 2 अप्लाई करछ टारगेट को मर्ज करछ देन फाइनली दैट यू आर डूइंग द माने जहां भी अलगा स्टेप करा था करछ सो दैट इज व्हाट यू कैन टेल कि हां एटा एसडी टाइप 2 ओके जोटा कि इट्स ए गोटे गोटे प्रोजेक्ट लेवल रे काम करिवो देन यू कैन एक्सप्लेन कि एसडी टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ओके सो सेति पे ए जिंसोटा इंपोर्टेंट जेतेबेले तुम गोटे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करछ किछि गोटे माने क्वेश्चन आंसर तो दैट इज फाइन कि सम कि यदि पचाला एसए2 दैट इज फाइन बट इफ यू आर implementing something so they will ask you what type of SCD types you are using so you can tell the SCD type 1 or type 2 mostly सब प्रोजेक्ट टाइप 2 ही यूज होची because they are maintaining the history ओके ठीक अछि हम एटा काली देखिबा आउ कार किछि डाउट्स अछि सर हम सर हमें डेल्टा टेबल ले जाओ गोटे फोल्डर रखले से फोल्डर भितर पार्के फाइल रहला तापर डेल्टा लॉग डा रहला सर हम से डेल्टा लॉग रे हिस्ट्री जा ट्रैक हेइ थौ ना सर हिस्ट्री रो सब जगह हिस्ट्री रहउनी बेसिकली हिस्ट्री डाटा रहउनी जहां भी चेंजेस करे मेटा डाटा तार रहउची माने ता कॉलम इंफॉर्मेशन ता रहउची ओके हिस्ट्री डाटा रहउनी ठीक अछि ठीक अछि ठीक अछि ठीक अछि we'll see tomorrow okay जदि कार डाउट्स नाही then we can stop here thank you sir okay थैंक यू thank सर